uh, something called as Anitya Bhaava. That's the way it comes through Sanskrit, or as per yoga philosophy and theory, it comes that way. And what we can easily understood as nothing is permanent. Okay, nothing is permanent. Okay, but reality check, we misunderstand life and we take things that are with us, or the way we are, or the way things happening with us, to be permanent. And I would say, with that thought, we we somehow feel unhappy when things change. Okay, but when unhappiness goes, it's a different topic. But when things are really going well and we think these will remain forever, nothing wrong, we should enjoy it well. But then we need to remember that everything is in a transition. As just now Sanju said, going on, we need to understand it's going on, life is going on, so let us keep flowing, kind of thing. So today we'll have a bit of discussion on that, and also more important, practice this particular feeling and fact of non-permanence. How do we understand it, how we can implement it for multiple purpose, and more than that, how how we can implement it in our daily life, so that we are aware that things are in transition, they are not permanent. So I think I'll skip this part, but anyways, if there are any new names here, I know most of you, so I can safely skip this part of it. And this one, just to highlight, as I keep saying, uh, these are the few different things that we are doing. And today's part, that is Anitya Bhava, it comes under yoga, wherein it is used as a part of meditation. It is used as a psychology part to help people practice a certain thing, to develop their mind, to make the mind work in a certain way. And today what is called as mindfulness. Okay, to be more mindful of every small activity, to be aware of every small activity. So let it be well processed within us before we actually move. So one of the typical examples which I share is, or when I teach yogasana and etc., it happens, I tell them to just make their hand straight on their right side. Trust me, many cannot do it. Many cannot do it. Just simple. Raise your hand, take it to the right and open it up. People go like this, people go like this, people are like this, bent, it can't. Till their mind goes there, they see it, and then it becomes straight. That is the reality. I face it almost every day. So that much amount of disconnect we have developed between our body, what is happening, and what this wants to do, or what we want to do. So doing these things with an awareness. It could be, I see a glass of water there, I see a gulab jamun there. The natural thing, I go pick up, eat it. It goes that unconsciously. So here, where we are aware, oh, there is a gulab jamun, should I eat? Am I hungry? Talk to your stomach, talk to your feelings. Should I eat? Not. Okay, this is right. I can take a small bite of it. I eat with the entire processing and mindfulness happening here. Then I put it in my mouth. Things are very different. We know what we have done. We are okay with it. We are aware of it. Okay, being aware of what we are doing is important. Same goes with every action of the body. I walk from here to the exit door. I'm aware, okay, I am going. Many times we do it very simply, without being aware. Uh, Classic examples. In a given day, we do many things, actually many things, which we are absolutely not aware of. Like it could be as simple as you wake up in the morning, you brush your teeth. How many of you are aware on how did you brush your teeth? Did I reach every part of the mouth over there, or every 32 teeth, those who have them? And it happens so naturally and unconsciously that we actually don't observe what am I doing. We will know only when we get that tooth pain and teeth pain and go to the dentist. Then we know, oh no, I was not brushing properly. I did it morning once I'm brushing, evening once I'm brushing. Some people brush even after lunch, but we are not aware whether we are doing it rightly. We just do it, do it, do it, do it, keep going. If somebody asks you, what did you eat for breakfast 2 days back? We will not remember.
I would say most of us may not remember. Some may be remembering it, but most of us don't remember it. So the idea here is to be more mindful, is what we have been many are preaching nowadays. But also, let's see how this concept also goes here. And um, the fact of impermanence, nothing is permanent, and using this method of reflection, which we'll do or practice soon, to come to the understanding, awareness, and a practice by which we can be more mindful and aware. To start with, let's have a look at this video. It's a more of a comic strip. Let me check these things here and play it. Let's have a look at it, hopefully. मैंने ना टीवी पे कुकिंग शोज देखना स्टार्ट किए. एक तो आता है आपका मास्टर शेफ वगैरह, इसमें कुकिंग कंपटीशन चल रहा होता है, वो नहीं. एक आती है ट्रैवल चैनल्स पे. इसमें क्या होता है, एक शेफ आराम से खाना पका रहा है और उसके साइड पे एक बंदा खड़ा किया होता है. उसका काम सिर्फ ये होता है, जो शेफ बोल रहा है उसको रिपीट कर दूं. ये एक्चुअली में एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है और बहुत मुश्किल से इसको होस्टिंग की एक जॉब मिल जाती है. और एक्टिंग के नाम पे एक ही एक्सप्रेशन आता है, ऐसे एक्साइटमेंट भर भर के बहुत सारा. शेफ आराम से बोल रहे, चलिए अब हम इसमें थोड़े अनियंस डालेंगे. अब ये इसमें थोड़े अनियंस डाल रहे हैं. अनियंस. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको थोड़ा सॉटे करेंगे. अब ये इसके थोड़ा सॉटे कर रहे हैं. फिर तो आपको क्यों तड़के लग रहे हैं? चिल. बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग करते रहते हैं यार. उस दिन मैं एक शो देख रहा था, उस पर कुछ पक रहा है एंड इज लाइक, दिस स्मेल्स सो नाइस. पानी उबल रहा था. शेफ साइड पे खड़ा है. गुड. चूतिया बोल सकते हैं टीवी पे? अलाउड है क्या? अलाउड है? अच्छा नहीं. फिर इनको बिठाया जाता है और इनके सामने 8-9 महंगी ऑथेंटिक डिशेस परोसी जाती हैं. ठीक है, इनका काम होता है ये खाएं और उसका रिव्यू दें. बट नहीं, इनके मुंह में पहली बाइट जाती नहीं, इनको कहीं से फूड गैसम आ जाता है. और फूड गैसम भी ऐसा कि मोक्ष प्राप्त हो गया पनीर चाट के. ओके, लेट मी ट्राई. शेफ्स ने क्या डाल लिया मुंह में इन्होंने यार. मैं 10 साल से पनीर बना रहा हूं, ऐसा रिएक्शन आ सकती है क्या मैंने ना? कि मेरा पनीर नहीं है. और कभी मुंह खुलता भी तो लाइक, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन. मैं कहता नौकरी छोड़ दो आप. रिव्यू मतलब वर्ड्स, साउंड रिव्यूज नहीं सुनने हैं मुझे. चिकन के साथ नहीं, मैं रेस्टोरेंट जाके ऐसे बात करूंगा, भैया एक चिकन देना जो है. कह रहा बटर चिकन नहीं, है वाला. कह रहा अच्छा, टेबल नंबर 4 पे चिकन मारना. सर स्टार्टर में कुछ लेंगे? हाँ पनीर लगा दो. कौन सा वाला? हे ये वाला. आप शेफ के बारे में सोचो कितना गुस्सा आता होगा उसका. इतना क्वालिफाइड शेफ है, 10-10 साल से इंटरनेशनल होटल से पका रहा है. हिलब्लेक की चूते खड़ा कर दिया मेरे साइड पे यार. वो ढंग का बंदा ढूंढ के ले आते. कभी इरिटेट हो गए ना, ऐसे चलते शो में गरम तवा चुबा देगा उसका. और वो तब भी कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा है. अब ये मेरा हाथ चला रहे हैं. आउची आउची यू. आउच शेफ, आउच. Okay, so for sure, I don't have your videos on, but I assume most of you had a good smile and at least a bit of laugh on this simple comic strip. But let's do a small experiment with this. Let's see how it goes. And because I cannot see you all, you are your own judges. Let's see how it goes. I'll play this strip again. Okay, I'm going to play this strip again. एक तो आता है आपका मास्टर शेफ वगैरह, इसमें कुकिंग कंपटीशन चल रहा होता है, वो नहीं. एक आती है ट्रैवल चैनल्स पे. इसमें क्या होता है, एक शेफ आराम से खाना पका रहा है और उसके साइड पे एक बंदा खड़ा किया होता है. उसका काम सिर्फ ये होता है, जो शेफ बोल रहा है उसको रिपीट कर दूं. ये एक्चुअली में एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है और बहुत मुश्किल से इसको होस्टिंग की एक जॉब मिल जाती है. और एक्टिंग के नाम पे एक ही एक्सप्रेशन आता है, ऐसे एक्साइटमेंट भर भर के बहुत सारा. शेफ आराम से बोल रहे, चलिए अब हम इसमें थोड़े अनियंस डालेंगे. अब ये इसमें थोड़े अनियंस डाल रहे हैं. अनियंस. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको थोड़ा सॉटे करेंगे. अब ये इसके थोड़ा सॉटे कर रहे हैं. फिर तो आपको क्यों तड़के लग रहे हैं? चिल. बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग करते रहते हैं यार. उस दिन मैं एक शो देख रहा था, उस पर कुछ पक रहा है एंड इज लाइक,
दिस स्मेल सो नाइस। पानी उबल रहा था। शेफ साइड पे खड़ा है। गुड। चूतिया बोल सकते हैं टीवी पे? अलाउड है क्या? अलाउड है? अच्छा नहीं। फिर इनको बिठाया जाता है और इनके सामने 8-9 महंगी ऑथेंटिक डिशेस परोसी जाती हैं, ठीक है? इनका काम होता है ये खाएं और उसका रिव्यू दें। बट नहीं, इनके मुंह में पहली बाइट जाती नहीं, इनको कहीं से फूड गैसम आ जाता है। और फूड गैसम भी ऐसा कि मोक्ष प्राप्त हो गया पनीर चाट के। ओके, लेट मी ट्राई। शेफ्स ने क्या डाल लिया मुंह में इन्होंने यार? मैं 10 साल से पनीर बना रहा हूं, ऐसा रिएक्शन आ सकती है क्या मैंने ना? ये मेरा पनीर नहीं है। और कभी मुंह खुलता भी तो लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मैं कहता नौकरी छोड़ दो आप। रिव्यू मतलब वर्ड्स, साउंड रिव्यूज नहीं सुनने हैं मुझे। चिकन के साथ है नहीं, मैं रेस्टोरेंट जाके ऐसे बातें करूं, भैया एक चिकन देना जो है। कह रहा बटर चिकन नहीं है वाला। कह रहा अच्छा, टेबल नंबर 4 पे चिकन मारना। सर स्टार्टर में कुछ लेंगे? हाँ पनीर लगा दो। कौन सा वाला? हे ये वाला। आप शेफ के बारे में सोचो कितना गुस्सा आता हुआ उसका। इतना क्वालिफाइड शेफ है, 10-10 साल से इंटरनेशनल होटल से पका रहा है। हिल ब्लैक की चूते खड़ा कर दिया मेरे साइड पे यार। कोई ढंग का बंदा ढूंढ के ले आते। कभी इरिटेट हो गए ना, ऐसे चलते शो में गरम तवा चुपा देगा उसका। और वो तब भी कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा है। अब ये मेरा हाथ जला रहे हैं। आउची आउची यू। आउच शेफ आउच। So, simple question. How many of you laughed on this joke twice? Unmute, use the chat window और कुछ भी कर सकते हैं. But interesting point would be, पहली बार तो definitely अच्छा लगा, we laughed, खुशी आई, we had a certain emotion. लेकिन वही set of jokes और एक बार हमने सुना तो कितने लोगों के चेहरे के ऊपर हंसी वापस आई? Not exactly, not the Not second time. exactly. Great. Yeah. Thank you for sharing that. और कौन है? नीलम जी saying first time, that is true. Yeah. Anyone else? बाकी लोगों की नींद खुल गई? हाँ, हंसी नहीं आई सर। हंसी नहीं आई. ओके. तभी दूसरी नहीं हुआ। बार? हाँ. फर्स्ट टाइम. ओके. उमा जी. यस. फेमिलियर था, पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट और क्या आएगा, तो करेक्ट. क्यूरियोसिटी एंड फन चला गया था उस समय तक। There it is. Great. Good point. And yeah, और chat messages आ रहे हैं. Not the second time. Yes, Pritam ji. Thank you. So I think more or less most of you said the same thing, that जब हमने वही joke वापस सुना, that part of joke, and if you observe एक उस set में भी 2 बार joke है. Once he cracks the joke on chicken, second one he cracks the joke on paneer. तो एटलीस्ट पहली बार थोड़ा तो डाइजेस्ट हो जाता है, बट उसी को हम वापस सुनते हैं तो नहीं होता है. वी आर लाइक ओके, वी सी इट, इट्स ओके, देख लेते हैं. बट कमिंग टू द पॉइंट, दिस हैपन्स विथ लाइफ ऑल्सो, वेर इन हमारी जिंदगी में बहुत सारे अच्छी चीजें हुई रहती है. many good things will happen, we like it, we enjoy that moment. Maybe बाद में बैठ के some meditation, think of the best happy moment in your life, हम लेके भी आते हैं उसको, we enjoy it, that's fine. But can it happen again and again? Unfortunately, just the way we saw it over here, नहीं होता है. And we kind of okay, we get we say okay, done with it, done with it. But the joke part is this, the joke part or the tough part or the sad part is this, कि the sad part of the life. अभी इसके लिए मेरे पास वीडियो नहीं, सोचा इट्स ओके, टू मेनी वीडियोस, वीडियो नहीं लिया. बट इफ यू, आई थिंक वी अगेन सैड है तो इजीली याद रहेगा. सो द सैड पार्ट ऑफ लाइफ इज दिस, कि इफ देयर इज एनी हर्ट, हार्ट ब्रेक, फिजिकल आई वुड से इंजरी और समथिंग, और कुछ भी बुरा हुआ है जो याद रहता है, अनफॉर्चुनेटली वी रिलीव इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. उस दर्द को नहीं छोड़ते. वी कैन अगेन थिंक ऑफ इट, सिट एंड क्राई ऑन इट फॉर आवर्स टुगेदर. एनीबडी हु वुड नॉट एक्सेप्ट विद दैट, एनीबडी हु इज कंफर्टेबल, नहीं, उसको मैं छोड़ देता हूँ, एक बार हो गया खत्म एंड आई मूव ऑन.
I think it's difficult. And unfortunately, this is the reality of life, wherein some happy things we are moving away from it. And ऐसे दर्द भरी चीजें, they remain strong within us, and we stick to them, and we keep moving with it. Anybody? Sanju ji. Okay. Now let's take this one more example. I think most of, maybe a few of you may be aware. Now I have a blank screen here, you can see, right? And there is also a black dot here. So the standard question would be, assume you can see my display here, display दिखता होगा. Maybe मेरा खुद का वीडियो भी निकाल देते हैं, right? Let me get it again. The question would be, what exactly do you see on this screen? इस display पे क्या दिखता है, kind of question. Again, please help me answer. Chat भी आ सकता है, या अच्छा it's है, a पीछे गुड pop-up. सीनरी है, पहाड़ Yes, है, Preeta. पीछे पहाड़ है, गुड सीनरी है. Great. Okay. वो तभी वो कपिल जी को देख रहे हैं. इसलिए मैंने आपका मेरा ये निकाल दिया. ओके, फोटो देख रहे हैं मेरा. हाँ जी. White background with black dot. That is Okay, great. okay. Naveen ji saw a dot. That is Sorry. good. Yeah. हाँ जी. ब्लैक डॉट निकालना. हाँ, व्हाइट स्क्रीन है, पर जो छोटी सी चीज है ऑड कलर की, उस पर ध्यान जा रहा है, अटेंशन वहां जा रही है, जबकि बड़ी चीज पे नहीं जा रही. Correct, correct. That is right. Anyone else? और कुछ दिख रहा है यहाँ पे white screen पे और black dot जो है? Right? As simple as this. More or less, one of the, okay, I can come back on the screen and chat पे देखते हैं. Whole screen is white. Neelam ji dot and the whole screen is white. Okay. So one of the places where our attention goes is actually to that black dot. So again, the point that I'm trying to make here is, अगर हम जिंदगी को देखते हैं और many things happening around us, okay, there will be one small thing, one, I would say important also, but one important thing, yeah, small thing which is actually a problem to us, जो अच्छी नहीं है, हमें बुरा लगता है या वो हमें दर्द दे रही है. But our attention, instead of going to this big white board, our attention goes to that black dot. Okay, so the intention is to understand this fact and try to see probably this method, and there are many other methods to see at what are the other good things happening on our life. One of the classic methods or very useful method for this is gratitude. हमने सुना है gratitude आजकल, like we write gratitude statements, you know, and how they can help. But this is one of the ways by which we can see at the positive part of life. We can be thankful to that, and that makes a big difference in the life. Now, one of the techniques जो आज हम सीखेंगे, which is called as reflection, wherein we are trying to move from a mechanical mindset to mindful mindset, mindful activity. So I already cited with you the example of हाथ मुंह हो रहा है, सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, या you know, I'm having my breakfast. No mind, कुछ नहीं करना है, इसलिए we are just waking up and doing those activities. Okay, we don't enjoy it, we are not aware of it, we just do it. उसका इफेक्ट भी पता नहीं, अच्छा हो बुरा हो कुछ नहीं पता, till things go bad. So how do we practice this one? By using this method of reflect on the previous day. Now मैंने ऐसे डाला क्योंकि we are doing it in the morning now, we are going to practice it in the morning, और कल के बारे में देखते हैं. But given a chance, try to do it at the end of the day. सब कुछ खत्म होने के बाद दिन के एंड में एक 5 to 10 minutes, maximum 20 minutes, not more than that, 5 to 10 minutes, if you can do it, this can give a very good reflection of what has happened in that particular day, and इसके effects बहुत सारे जो we'll discuss soon. Important is, क्योंकि अभी हमें practice करेंगे, जब हम कल का पूरा दिन देखेंगे, we are not going to react. Obviously कुछ भी हुआ होगा, मे बी गुलाब जामुन खाया तो अच्छा लगा होगा, या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ तो गुस्सा आया होगा, बट इन दिस मोमेंट वी आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट. ओके, वी नो कि वो हुआ था कल, बोल के दैट्स कल 9 बजे आई एट गुलाब जामुन फॉर ब्रेकफास्ट इंस्टेड ऑफ ए हेल्दी फ्रूट. दैट्स इट, जस्ट देखना है, एनालाइज भी नहीं करना है, अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए तो वो करना है, वो नहीं करना चाहिए तो ये करना है, नॉट अबाउट दैट. वी जस्ट गो थ्रू आवर प्रीवियस डे एज इफ एक मूवी चल रही है. भावनाएं भी नहीं, नो इमोशंस.
like running a film in the mind. एक movie मन के अंदर चल रही है. That's it. So that's the idea. Practice जो हम करेंगे अभी. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. But that's all it is about. Let me check the time also. Good time. All set. चालू करते हैं. Like today, because it would be more of guided, so I'll help you out, but daily probably you'll just sit in a corner, do anything, just close your eyes and start reflecting. Today I'll guide so that you can channelize what you're doing, not more, maximum 10 minutes is what we are doing. I'm also calming our minds so that we do it in a certain way. Otherwise you can just sit and start off, nothing wrong. Once you do it regularly, you practice, you don't have to do this initial startup. Okay, so request you all to settle down 2 minutes. Again, I'll try to give as many words and commands as possible. So if you want, you can close your eyes. मेरी आवाज ढंग से सुनाई दी तो काफी है. And let us take a few deep breaths. लंबी सांसें लेते हैं. Now on, let us try to ensure when we take these deep breaths, जब हम लंबी सांसें ले रहे हैं, पेट से लेते हैं. So ये हवा, let it go all the way to your stomach. Fill the stomach with air and let it go out and let it. जब ये हवा बाहर जाती है, let the stomach go inside. Breathe in, stomach goes out. So हवा, पेट में हवा नहीं जाती है, but that movement helps. The diaphragm goes down. Relax, completely relax, settle down. Deep breathing, breathe with your stomach. Now let us try to follow a rhythm so that हम सब एक ही वक्त breathe करें और smooth रहे. तो please follow my commands. Let us all breathe out. पूरी तरह सांस छोड़ते हैं. And now let us all, हम सब सांस अंदर लेते हैं all the way to your stomach. Breathe in, breathe in, breathe in, in, out. No need to hold, let it go out, out. Stomach goes in. Breathe in. Breathe out slowly. Especially when going out, breathe out slowly. Breathe in. Breathe out slowly. Every time you breathe in fresh air, new energy. And every time you breathe out, let go all the unwanted energies, stresses, pains, problems. Let us breathe in a lot of new fresh energy, which will help us in our health, wealth, and happiness. Now on, no need to do any forced breathing. अब के बाद natural breathing करेंगे.
Another thing we need to thankful. It happens naturally, but we are not aware. Move your awareness. Let us be aware. How am I breathing? Don't change the breath. Just be aware of the breath. सिर्फ देखना है कैसे होती है सांस, बट उसको बदलेंगे नहीं. Now breathing is happening naturally. Let us go to the brain. Instead of leaving it empty, we'll use the time for reflection now. Reflection practice. So इसके लिए let us go to our yesterday. कल के दिन जो 21st December था. Let us go there. Let us start from the time when we woke up. जब हम उठे वहां से चालू करते हैं. Don't stress hard. Naturally करना है. कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा जब भी उठे जो हुआ था. On your own, scroll through the days slowly. जो भी याद आता है सुबह उठने के बाद उनको देखते जाते हैं. Till the time you dozed off last night. Just to help you, try to scroll through all the activities which you did as soon as you woke up. Many of you may be also able to visualize it. देख भी सकेंगे. कुछ लोगों को सुनाई भी देगा और आवाज भी आ सकती है, खुशबू भी आ सकती है. Depends on our sensory organs. कितना हम sensitive हैं, कितना हम aware थे कल. All the way to your first food. Could be a bed tea or breakfast. क्या खाया था, कैसे था, पसंद आया क्या? Who gave you that breakfast? Where did you sit and eat? अगर कोई चीज याद नहीं आती तो इट्स ओके. मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डे. What all happened between breakfast and lunch? Typically, food is a good goalpost, so easy to remember things between that. Who all are the people that you saw, you met, you spoke? कौन से फोन कॉल्स आए थे?
What conversations happened? किसके साथ क्या बात हुई? कौन से कपड़े पहने थे? Instances when you felt happy and sad. अगर यू कुड फिनिश एवरीथिंग, अगर फास्ट आपने खत्म कर दिया है तो वापस और एक बार उसी दिन को देखिए और डिटेल में देखने की कोशिश। Did you exercise? Did you take your afternoon nap? Did you do any good things? There were moments where you felt happy. There were moments when you felt sad also, but that didn't remain for long. वो ज़्यादा लंबा नहीं थे, वो चले गए. Keep going till the end of the day. जब फाइनली आपने डिसाइड करके सो गए. Once you are done for the full day, enjoy this music for a minute or two. Of course, if you want, you can do it again once more, scroll through, nothing wrong. Remember, no analysis, no emotions, just देखना है, अवेयर रहना है क्या क्या हुआ.
Beautiful. Whenever you feel, you can come back. Open your eyes. And feel free to unmute and share your experience. How did it go? कैसे लगा, क्या हुआ? कुछ अलग हुआ तो please, of course, share. Was it easy first of all? देख पाए क्या कल क्या हुआ था? Yes, sir. Yes, Ashmi ji. या बहुत मोटे मोटे लैंडमार्क याद आ रहे थे, पर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इनसिग्निफिकेंट थी, शायद इसलिए हम लोग रिटेन नहीं कर रहे थे, रिकलेक्ट नहीं कर रहे थे। Correct, पर हाँ, correct. जो मेन थे वो याद आए। पर हाँ, इमोशंस रहते हैं साथ में, ऐसे मतलब आप कहते हैं ना, आता है. विदाउट इमोशंस, विदाउट दिस, ऐसा नहीं हो रहा था। इमोशंस आते हैं तभी तभी मेमोरी में रहते हैं, चाहे बैड इमोशन चाहे गुड इमोशन। Agreed, agreed. So one definite thought is when a memory is associated with emotion, तभी याद रहती है. Okay, that is important fact, especially on a long run. But also this theory that we need to be aware. हर चीज हम कितने awareness के साथ करते हैं उतना ज्यादा याद रहता है. That's good. Good observation. Anyone else? Assume सब लोग अभी भी practice कर रहे हैं या? Yeah, can I share something? Yes, please. Yes, please. Yeah. Yeah, so you said that try not to be reactive about whatever you think or Hmm. see. Hmm. But I think so. Yesterday, I felt that I spent some time in some random stuff. Hmm. So I was feeling, oh, I couldn't have done that. So it would have saved Hmm. my time or something like that. So Correct, correct. those thoughts came. Yeah. Understand. Yeah, good point. So that is the natural Ah, tendency, no. Sorry. Yeah. So that is the natural tendency of us to get entangled over there. कि अरे मैंने ऐसे क्यों किया, ये क्या किया. But the intention is try our best to just know what I did. पहले सिर्फ समझना है क्या किया. That is good enough to change our today. कल जो हुआ वो पता चला. इससे we can influence how we behave today. It can be seen as introspection also, and many different words are there. Yeah. Anyone else? I think Preetam ji Yeah, wants to. Yeah, but Induja. but then if I still like, if I'm self-bashing for that Hmm. in my thoughts, and yesterday itself I was thinking that I have spent so much time in this, I shouldn't have Correct. done that. Yeah, yeah. Yeah. Actually, good to be aware of that. That is part of introspection. So we do that, we analyze it, we understand, and we ensure we don't repeat that mistake again. In my words, try to do one mistake only once. Try to do one mistake only once. So um, good to be aware, but specifically about this method of reflection, we suggest not to get entangled anywhere. इंट्रोस्पेक्शन मेथड में डीप जा सकते हैं. नथिंग रॉन्ग. यस प्रीतम जी. हाँ, मेरे साथ इमोशंस नहीं आती मेरे को. गुड. ओके. लेकिन आप देख पाए पूरे दिन को ढंग से. हाँ, एंड ऑब्जर्व कर पाए ना क्या क्या हुआ था. ग्रेट. गुड गुड. हैप्पी टू नो दैट. एनीवन एल्स? Yes, when I done my whole day, I remembered everything. Wow, very good. Yesterday was the I ate more breakfast that was making me at Correct. night. I just thought I will not take more than 2 pieces of that. That was Good, good. There it is. I got upset. My stomach was upset. Yeah. And then I just too much कि आज की बात नहीं खाना मुझे. नथिंग रॉन्ग. इसमें गिल्ट नहीं महसूस करनी है. जस्ट पता होना चाहिए कि किया है, अगली बार नहीं करेंगे. I was aware. That's and it. my son said कि you take one idea or one thing at the time, or you take one thing at the time that guide me much more. कि जो भी चीज होती है वो many thoughts come in our minds. So what that was remembering, I was remembering that the same point. Correct. Many thoughts come at the same time instead of one at a time, right? Yeah. Yes. हर एक thought को पार करना पड़ेगा. Good, good. He's guided to me. Great. Very much great person. I just
Good, Thanks good. to God, he is a good philosopher also. Nice, lucky you. Good, good. Thanks. So Yes, thank you for we were reacting sometimes, na? That was the main point. हाँ, yes. Try your best not to react, but आ ही जाता है कुछ ना कुछ. Yes, or at last I thought that everything is not permanent. It's going on. Precisely, I was coming to that. Very well. So you saw वो आया, even if I just said the example of food, okay, I ate it, but reality 2 घंटे के बाद हो जाता है, digest हो जाता है. Worst case, end of the day, it is over, and next day can be something different. गुस्सा हो या thank you, it is not permanent. When we see what happened yesterday, we'll understand a bit of glimpse that it's not permanent. So this is thank you, Neelamji. What it can be said as mindfulness or aware of all the actions. So आप जितना aware रहेंगे उतना याद रहेगा, as simple as that. So try your best to do the actions, activities, words, talking to someone, anything with a awareness. There is a joke, like, it's like goes like some people talk and then think, and some people think and then they talk. Okay, it goes like that. So try your best to process it and then do that action. That's it. Second, abhi pata chala, very good example, last one, jahan we understood ki she knows ki the amount of food that she ate was not the right one, etc. So today she can plan better. So that awareness helps to plan our today in a better way. Improves memory, definitely. जो important चीजें याद रखनी है, अरे people complain मैं भूल जाती हूँ. Very simple. We are not aware. If we are in a witness state, if we are aware of what we did when, aware when that particular action happened, will improve our memory also. I think with that I can take a pause. I think